Hello guys, today in this video we will be discussing Mendelian genetics PYQs, the remaining part tha. Okay, so some questions are remaining and these are also very easy type. First question, assuming that A, B, C, D are the genes which are not linked, okay, probability of a progeny being this genotype from a cross between so and so genotype, ये parents है and we have to find the genotype of children being this phenotype. Okay, see, so हम इसे solve कर सकते हैं. How we can solve? So this is a condition. अभी ये parents है and this is a probability progeny and इसकी probability हमें find करनी है, right? Probability. So how can we do this? Easy है बहुत. See, first of all, जो homozygous condition होती है, right? See this homozygous and this is homozygous. Again this is homozygous, this is homozygous. इसमें सब homozygous है. राइट जो होमोजाइगस कंडीशन है दैट वी हैव कंसीडर 1 एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है उसमें हाफ. तो बस हमें हाफ को देखना है, राइट. सी अभी ये जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन दिस विल बी हाफ, राइट, एंड इसमें हाफ है. ओके, हाफ एंड हाफ, बाकी का सब होमोजाइगस कंडीशन है. सो हेटेरोजाइगस we will get 1/4. So answer will be option 3, 1/4. Right? Now the next question, how many genetically different gametes can be made by an individual of genotype so and so? इसमें भी सेम रूल, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है उधर से 2 गैमेट्स आएंगे, राइट, 2 गैमेट्स, एंड जो होमोजाइगस कंडीशन है वो 1 होगा, राइट. सो दिस कंडीशन 2, बी में भी 2 होगा, सी का 1 एंड डी का भी 1, ई का अगेन 2, राइट. हेटेरोजाइगस कंडीशन है, सो 2 gametes, one with capital E, other with small e, राइट. सो इससे करो टोटल 4, 5, 6, 7, 8. So again option 3 will be the answer, right? A plant of the genotype ABB self, the 2 genes are linked and are 50 map units apart. What proportion of the progeny will have the genotype? Complete recessive, homozygous recessive. Very easy. 2 genes है A and B. Okay, मतलब dihybrid cross, and इसमें we have to see the complete recessive. 1/16 will be the answer. Option number 4. Okay. क्वेश्चन में ये जो दिया है जीन्स आर लिंक्ड एंड आर 50 मैप यूनिट्स अपार्ट. 50 मैप यूनिट्स मतलब ये मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है. ओके, सो द जीन्स आर नॉट लिंक्ड बेसिकली एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है उसमें, दैट वी हैव टू रिमेंबर. ओके, 50 मैप यूनिट्स इज अ मैक्सिमम, राइट. उससे कम होगा तो हम कहेंगे जीन्स आर लिंक्ड. 50 map units apart है तो genes are not linked. This is a case of independent assortment. Now the next question, 1:1 sex ratio, probability that 3 children from the same parent will consist of 2 daughters and 1 son. Sex ratio तो equal होता है 1:1. So we have to find the probability. Okay, now probability how we can find? Now see, for daughter and son, I will do this also in the new slide. Daughter will be half probability, son will be again half probability. Okay,
अभी उन्होंने पूछा है 2 daughters and 1 son। ऑर्डर ऐसा भी हो सकता है, डॉटर के बाद सन, उसके बाद डॉटर, ऐसे भी हो सकता है, फर्स्ट सन देन 2 daughters, ऐसे भी हो सकता है। So these combinations are 3. Okay, combinations are 3 and 2 daughters. 2 daughters मतलब half into half into half. These are the daughters, 2 daughters and son. Okay, so this will be 1/8. 1/8 multiplied by, this will be 3/8. Okay, so this will be something 0.3. Right, let's check the options. Option number 1, 0.375. Okay, now this question. In a plant, male sterility is called by the presence of dominant allele for a nuclear gene MS. Okay, male sterility के लिए MS gene responsible है. There are also lines which carry a dominant allele F, restores male fertility. These are called restorer lines. Okay. A cross is made between a male sterile line and a homozygous restorer line which does not contain MS alleles. See, this is very important. Cross between male sterile and homozygous restorer जिसमें MS allele absent है. Of the F1 progeny, only those that carry MS allele are allowed to self-pollinate. What is the probability of obtaining a male sterile line in resulting F2 progeny? मतलब मेल स्टीराइल लाइन की प्रोबेबिलिटी F2 प्रोजेनी में क्या होगी? That we have to understand. MS and F genes are sought independently. Okay, ठीक है. Now how can we solve this? जो क्रॉस दिया है that we have to carefully note. First of all, male sterile, I will write the phenotype, and male fertile. जो फर्टाइल है उसमें कैपिटल एफ है, ओके, एम स्मॉल होगा, राइट. इसमें फर्टाइल स्टीराइल में एफ स्मॉल एंड एम कैपिटल. दिस आर द एम एस जीन्स. ओके, जो F1 होगा दैट विल बी हेट्रोजाइगस कंडीशन. ओके, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. दिस इज द F1. अभी F2 में genotypes we will write M dash F dash. Okay, then M dash F F, then M M F dash. Okay, and M M F F. अभी ये तो फर्टाइल होगा, ये भी फर्टाइल होगा. ओके, बिकॉज ये रिसेसिव, एम रिसेसिव है मतलब फर्टाइल, एंड दिस विल बी स्टीराइल बिकॉज इसमें एफ रिसेसिव है. ओके, सो फर्टिलिटी रिस्टोर नहीं होगा, सो दिस विल बी स्टीराइल. एंड 3, आई एम कंफ्यूज विद दिस फेनोटाइप. ओके, दिस इज 9 एज वी नो, बट ये कंप्लीट स्टीराइल होगा, राइट. सो आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर 2, 3/16. ओके, बिकॉज ऑप्शन में 16 तो होना चाहिए बिकॉज देयर आर 2 जीन्स, राइट, एंड 1/16 तो नहीं हो सकता बिकॉज इट विल बी कंप्लीट रिसेसिव. ओके,
that will be not the thing. Next question. Mendel crossed tall pea plants, okay, tall pea plants with dwarf ones. The F1 were all tall, F1 जो हमें पता है. Then F1 selfing करने के बाद F2. He got 3:1 tall to dwarf ratio. What is the probability that out of 3 plants of F2 generation picked up at random, 2 would be dwarf and 1 would be tall? Okay. अगेन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है. 2 डॉर्फ होना चाहिए, 1 टॉल होना चाहिए. इजी एज वी डिड हियर. सेम. टॉल की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3/4, राइट, एंड डॉर्फ 1/4, राइट. 2 डॉर्फ and 1 tall. 1/4, 1/4, 3/4. Okay. So इसका अगेन 3/64 होता है, राइट. 3/64. अगेन इसमें भी 3 कॉम्बिनेशन होंगे. 2 डॉर्फ 1 टॉल, या टॉल मिडल में हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है. So these are the 3 combinations. So again we will multiply by 3 here. So the answer will be 9/64. Option 3. Now the next question. Phenotypically normal fruit fly was crossed to another fly whose phenotype was not recorded. Okay. मतलब एक ऐसा फ्लाई है जिसका फेनोटाइप हमें नहीं पता, एक का पता है. Of the progeny, 3/8 were wild type. 3/8 had ebony body color, 1/8 had vestigial wings, and 1/8 had ebony body color and vestigial wings. Ebony body color and vestigial wings are recessive characters, and their genes are located on 2 different autosomes. Based on this information, which one of the following is likely genotype of the parents? Parents का genotype हमें find करना है, right? First of all, data जो दिया है that we have to note. See now, 3/8 जो 3/8 है first, that is wild type. Okay, wild type मतलब E plus होगा, E plus dash VG plus. Okay, these are the 3/8. नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज ई बोनी. ई बोनी बॉडी कलर रिसेसिव कंडीशन है, मतलब ई होगा, एंड वीजी प्लस, राइट. नेक्स्ट कंडीशन है वेस्टिजियल विंग्स 1/8, दैट विल बी वेस्टिजियल जीन्स वाला रिसेसिव, ये होगा प्लस. ओके. अगेन जो लास्ट है ई बोनी एंड वेस्टिजियल दोनों. अभी जो दिस जेनोटाइप इज सेम 3/3. ओके, सेम है 3/3, इक्वल है. तो यहाँ पे पेरेंट हेट्रोजाइगस होना चाहिए, यहाँ पे ई आया ना. सो सपोज दिस इज अ पेरेंट 1, दिस इज अ पेरेंट 2, इसमें भी ई होना चाहिए, इसमें भी ई होना चाहिए, एंड ई प्लस है मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए एट ई में. ओके, ई में हेट्रोजाइगस कंडीशन
Also जो VG है VG that will be also in the heterozygous condition in one parent. So the option number 4 will be the answer. Right. See, this is a heterozygous condition. Okay. And this. Got it? Option 4 confirm. In summer squash, white color fruit is dominant over yellow color and disc shape phenotype is dominant over spear shape phenotype. Determine the genotype of the parents. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. पेरेंट्स का जेनोटाइप हमें फाइंड करना है. If the cross between white spear crossed with white spear gives 1/4 white spear and 14 yellow spear. Okay, I will erase this. It will be easy to solve here only. Okay. White spear cross with white spear gives 1/4 white. Okay. See, ऐसा कंडीशन होगा. This is white spear, right? Then यहाँ से जो ये D वाला जो है spear वाला वो तो ऐसे ही रहेगा. ओके मतलब पेरेंट्स भी वैसे ही रहेंगे. DD, राइट. W और W अगर आया कैपिटल, this will be white spear. Okay, and this will be 1/4 as they are saying, and 14 will be yellow spear. मतलब WW and these are the 14, right? तो हमें बस D जो है spear that we have to understand, note. Okay, ये recessive condition होनी चाहिए. So this is only in the option 2. See both the parents. This is your condition. Spear ही मिल रहा है हमें. Right? Dick shape नहीं मिल रहा कुछ भी. Okay, dick shape नहीं मिल रहा. So the option will be option 2 only. Spear. Because dick shape हमें मिल ही नहीं रहा. Other options जो है उसमें हमें dick shape का भी phenotype visible होगा. Because in every option there is capital D as well, which will give dick shape phenotype. Okay, बस उसी reason say option 2 is the answer. So these were all the PYQs of the Mendelian genetics, right? So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.